So namaskar all of you. Amara Sociology optional OCS 2025 मेंस ପାଇଁ जो टेस्ट सीरीज चलची आरोहन रे तो 16 टा टेस्ट हमरो रहउची जो थरे 10 टा सेक्शनल टेस्ट रहउची आउ 6 टा आपनकर फुल सिलेबस टेस्ट रहउची सो तीनटा बैच ए टेस्ट सीरीज रो जुलाई रे गोटे स्टार्ट हेतला अगस्त 1 रे गोटे स्टार्ट हेची और लास्ट बैच टा अगस्त 10 रो आपनको स्टार्ट होची तो जो फर्स्ट बैच रो जो आपनकर और सेकंड बैच रो जो तांकर टेस्ट नंबर 5 ता विषय रे मु किछि आपनको संगे आज डिस्कस करिवि सो लेट अस स्टार्ट विथ दैट सो टेस्ट नंबर 5 को असंतु टेस्ट नंबर 5 पेपर 1 संगे रिलेटेड सिलेबस कौन रोचे हमर टेस्ट नंबर 5 रो पेपर 1 सोशल मोबिलिटी इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम आ ऊपर रोची लेट अस गो टू द क्वेश्चंस क्वेश्चन 1 सेक्शन ए रो जोटा 15 मार्क क्वेश्चन हाउ डू open and closed models of social mobility impact societal stratification. Discuss the implications of these models on achieving equality in diverse societies. Eta question 1. Question 2. In what ways do intra and intergenerational mobility differ in their influence on social structures? Evaluate their roles in perpetrating or disrupting systemic inequalities. Question 3. How does vertical mobility redefine power dynamics within rigid caste or class systems? Analyze its potential to influence economic and social change. Question 4. How do the sociological dimensions of economic life influence class formation in industrial societies? Discuss with reference to both Marxist and Weberian perspectives. Question 5. In what ways do economic processes reinforce or undermine traditional social hierarchies? Explore this dynamic with examples from developing countries. Question 6. How does the division of labor in pre-industrial societies differ in its social implications from that in industrial societies? Compare their impacts on gender roles and community cohesion. Question 7. How does concept of personal power differ from community power in influencing political participation? Discuss their respective impacts on democratic governance. Question 8. In what ways do pressure groups and political parties serve as mediators between individual interests and state authorities? Analyze their role in shaping public policy. It is question 8. Question 9. How does the interplay of class power and elite power influence voting behavior in modern democracies? Provide examples from India and Western nations. Question 10. The history of all heritio existing society is the history of class struggles. How does Marx's view apply to dynamics of economic and political power in contemporary societies? Question 11. Authority is not a quality one person has, but a relationship in which one person obeys another. Discuss Max Weber's understanding of authority in context of modern bureaucracies. Question 12. The ruling idea of each age has ever been the ideas of its ruling class. How does this Marxian perspective apply to dissemination of ideologies in mass media today? तो 12टा क्वेश्चन देखि 10टा आपन करियार अछि बट टेस्ट देला पारे बाकी जो दीटा क्वेश्चन आपन छाडु चंती सेटा भी मॉडल आंसर रो देखि देबे हला एबे सेक्शन बी 20 mark question. Question 13. Legitimacy is the foundation upon which
authority sustains itself. Critically evaluate this statement with examples from authoritarian regimes. Question 14. How do democratic and authoritarian models of political participation impact the political consciousness of marginalized groups? Examine with reference to historical and contemporary examples. Question 15. What role does industrialization play in altering the relationship between rural and urban economies? Evaluate its influence on social structures and cultural practices. How do social determinants like education and cultural values shape economic development in diverse societies? Illustrate your answer with examples from India and abroad. Question 17. Social mobility acts as bridge between individual aspirations and societal expectations. Critically discuss the statement with examples of closed systems like the Indian caste hierarchy. Question 18. How does horizontal mobility shape the cultural and economic intensity of migrants within globalized urban centers? Examine its broader societal consequences. ATB, 6टा क्वेश्चन जो देछि ता भितर 5टा आपण करियर अछि, बट आफ्टर द टेस्ट आपण जो क्वेश्चन ता छाडिले ताको भी एनालाइज करियो. ओके, तो सेमिति जदि आपण 18टा क्वेश्चंस ईच टेस्ट रो 16टा टेस्ट अछि ताको प्रॉपर एनालिसिस करचंती, प्राय सब क्वेश्चंस ता भितर ही आसी जिवो. ओके, नाउ जो माने वेल प्रिपेयर्ड अछंती आपण डायरेक्टली टेस्टर देबे, टेस्ट देला परे तापर जाई कि मॉडल आंसर संगे देखि परिबे को पॉइंट्स करिका आपण को मिस हे जाई कि किछि एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोटा आपण ऐड करि परिबे, माइंड मैप्स करिका भी देखि परिबे. ओके, जो माने पूरा नुवा अछंती कोर्स सारी नाहंती किंतु प्रैक्टिस करूचंती ताले प्रथमे मॉडल आंसर ता पढी कि तापर लिखले भी चलिबो. मेन जिंस आपण को लिखिबार अछि, लेखिकी ताको गोटे पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करिकी पठेबे इवैल्यूएशन पई. पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन आपनकर क्वेश्चन वाइज हबो और 4 डेज भीतर आपनकर इवैल्यूएटेड कॉपी आपनको मिलिबो. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो माने सोशियोलॉजी ऑप्शनल नै की प्रिपेयर करचंती. जो टेस्ट सीरीज रो मु कहउतली आपनको, तो जनरल स्टडीज कंपलसरी पे बैच 1 जुलाई 20 रु स्टार्ट हेतला, बैच 2 अगस्त 1 रु स्टार्ट हेची और बैच 3 जोटा कि लास्ट बैच सेटा अगस्त 10 रु स्टार्ट हबो. सेमती हम ऑप्शनल जति देखिबा 13टा ऑप्शनल कवर होची. सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन और लॉ. ओके, तो ये ऑप्शनल बैचेस रो भी फर्स्ट बैच ता 15 जुलाई रु स्टार्ट हेतला, सेकंड बैच ता 1 अगस्त रु स्टार्ट हेची और लास्ट बैच ता अगस्त 10 रु स्टार्ट हबो. तेनु जो माने जॉइन करिया पे चाहउचंती डायरेक्टली आपण व्हाट्सएप करिके जो स्क्रोल रे जो नंबर दिया होची से थरे व्हाट्सएप करिके आपण जॉइन कर परिबे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. जो माने सोशियोलॉजी ऑप्शनल नै कि दोचंती बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल, तेनु से हिसाब रे आपण को आंसर रे टिके किछि वैल्यूज ऐड होबा कथा, वैल्यू एडिशन होबा कथा, जेमति कि स्टैटिस्टिक्स हे जाओ कि इंपोर्टेंट बोथ क्लासिकल थिंकर्स और मॉडर्न थिंकर्स करो. ओके, सोशल थिंकर्स करो, ताकर पर्सपेक्टिव कोन से जिंसोडा भी आपण ऐड करि परिबे. बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार.